अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो कल के टॉपिक की ही कंटिन्यूएशन है। कल हमने पढ़ा था जनरल एग्जेम्पशंस या एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल ऑफ टॉर्ट। जनरल रूल तो ये है कि whoever has suffered an injury of a wrongful act or omission is entitled to sue. Similarly, all persons who commit a tort would be liable and can be sued in a court of law. लेकिन इस जनरल रूल की कुछ एक्सेप्शंस थी कि पर्सन्स हु कांट सू, वो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि कौन कौन से पर्सन्स हैं जो सू नहीं कर सकते, जिनमें एलियन एनिमी, चाइल्ड एंड मदर वोम, कन्विक्ट, हस्बैंड एंड वाइफ, इंसॉल्वेंट, फॉरेन स्टेट, कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्सन्स हु कांट बी सूड। वो कौन कौन से पर्सन्स हैं जो अगर टॉर्ट कमिट भी कर लें लेकिन उनको सू नहीं किया जा सकता। देयर आर 9 प्राइमरी क्लासेस ऑफ द पर्सन्स हु कांट बी सूड इन टॉर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द किंग, action for torts against the sovereigns will not lie, और जिनमें सिंबॉलिकल या फैक्चुअल पर्सन है वो है किंग। और किंग के बारे में एक ओल्ड यूरोपियन मैग्ज़म है कि किंग कांट डू रॉन्ग। तो इस बेस पे किंग या क्राउन कैन नॉट बी सूड फॉर द tortuous acts of his own or its servants, agents, and who they are acting in course of their employment to the crown. But this law is considerably modified by the enactment called Crown Proceedings Act 1947, and hence this law is no longer a good law. तो बहुत कुछ अमेंड हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है। अब किंग को कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स जो कि क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट में डिटेल है पूरी, कुछ एक्ट्स के तहत उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड किया जा सकता है। जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज़ sovereigns। Foreign sovereigns. Foreign sovereigns cannot be sued unless they submit to the jurisdiction of British court
or currently in Pakistan, under the Article 248 of Constitution of Pakistan 1973, President, governors, ministers shall not be answerable to any court, first of all for the exercise of and the performance of powers and duties to their office, and for any act done by them in the exercise of those powers and duties, except in respect of anything done or not done by them in contravention of that law or any particular law. While under section 87 of Civil Procedure Code, foreign sovereigns can be sued in the courts of Pakistan only with the previous consent of the central government. तो सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 87 इसमें क्लियर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन से ही आप फॉरेन सॉवरेन्स के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकते हैं। इसी तरह जो एम्बेसडर्स हैं फॉरेन, foreign ambassadors and their families and servants can't be sued in Pakistan unless they waive their privilege by submitting to the court of Pakistan. The next class is public officials. Public official is a person invested with the authority of an office, and no action lies against a public official in their official capacity in respect of torts committed by them, but they are liable in damages for the tortious acts committed by them in their private capacity. अगर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में वो कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो टॉर्ट के ज़ुमरे में आता है, देन उनके खिलाफ प्रोसीड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में वो कोई एक्ट करें, कोई टॉर्टस एक्ट करें, देन डेफिनेटली उनके अगेंस्ट प्रोसीड किया जाएगा। ये क्लियर है एक चीज़। द अदर क्लास इज़ इन्फेंट्स। Minors or infants. Ordinarily, infancy per se is no defense. They are liable for the acts and omissions committed by them. In general, a minor is also liable for his torts in the same manners and to the same extent as an adult, but where there is intention, knowledge, or some other condition of mind of wrongdoer, form an essential ingredient of liability.
then infancy, minority or extreme youth age is a good defense. और इसमें जेनिंग्स वर्सेस रेंडल 1799 ITR पेज 335 और इसी तरह बर्नर्ड वर्सेस हैगिस 1863 14 CBN पेज 45 ये बहुत मशहूर केस लाज हैं इंग्लिश कोर्ट्स के जिनमें ये हेल्ड किया गया है कि जहाँ स्टेट ऑफ माइंड का कोई इशू है देन एक्सट्रीम यूथ एज जो है वो एक गुड डिफेंस हो सकता है, अदरवाइज नहीं. द नेक्स्ट क्लास ऑफ द पर्सन हु कांट बी सूड इज lunatics. Ordinarily, lunacy is no answer in case of tort, but like infant, lunatic will not be liable for fraud, malice, etc., unless the court be of the opinion that he was capable of conceiving such intention. If a person sane enough to be accountable to the criminal law would probably be liable for any kind of tort. Clear है इसमें. Other is corporation. Corporation cannot be sued unless the act done was within the scope of the agent employed by the corporation and the act done was within the purpose of its jurisdiction. आपके एजेंट ने अनलेस कोई ऐसा काम किया है कि जो उसके स्कोप में था और कॉरपोरेशन की jurisdiction के पर्पस में था, then corporation would be liable, otherwise not. The next class is trade unions. जो पाकिस्तान में पोजीशन है कि ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926 provides that the registered trade unions cannot be sued or its funds proceeded against in respect of any act done by its officers in contemplation or furtherance of a trade dispute. Thus, ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत हम कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन मे बी सूड इन इट्स रजिस्टर्ड नेम. रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और उसके ऑफिसर्स एंड द मेंबर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ सर्टन टॉर्ट्स. कुछ टॉर्ट्स हैं जिनमें उनके अगेंस्ट आप प्रोसीड नहीं कर सकते.
ताहम सेक्शन 18 में कहा गया है कि no suit shall be maintainable against them or any of them in respect of any act done in contemplation or in furtherance of trade dispute to which a member of a trade union was a part, on the ground only that such act includes some other person to break a contract of employment, or that it's an interference with the trade, business, or employment of some other person, or with the right of some other person to dispose of his capital or labor as he wills. So 1926 के जो ट्रेड यूनियंस एक्ट है उसके तहत हम इसको समअप करें और अगर उसका लुबे लुबाब देखें तो कुछ सर्टन टॉर्ट्स में उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग हो सकती है, और ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड है उसके रजिस्टर्ड नेम के थ्रू ही इन हिज रजिस्टर्ड नेम आप उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड कर सकेंगे. The 9th class is married women. (1935) से पहले तक सिचुएशन ये थी कि a married woman could not be sued for the torts committed by her during the period of her marriage. She could only be sued if her husband was joined with her as defendant. लेकिन Married Women and Tortfeasors Act 1935 जब आया 1935 में, और उसके बाद जो है ना married woman is liable in respect of any tort and is capable of being sued independently. तो क्लियर है ये.